Okay, hello, hi everyone. Thank you so much for joining. Thank you so much for joining. We welcome you all. Uh, Welcome to this webinar by DhiSter Education. Uh, it's one of obviously it's India's best skill-oriented career school. Okay, and it's an approved training center by NSDC. My name is Chirantan. I am a data scientist. I have more than 6 years of experience in data science. Most of my experience has been in the field of banking and finance, healthcare, manufacturing, so on and so forth. Uh, the projects that I worked on mostly focused on machine learning, statistical data analysis, and pure data reporting. All right, so I welcome you all to this webinar. And obviously, this webinar is meant for everyone who are really interested in the field of data science, who are interested in the field of data analytics, in the field of data engineering, someone who want to make a very serious career, okay, and also a very rewarding career per se. But before we get into what kind of roles are actually there, whether it's a data scientist, data analyst, data engineering, yes, we have many roles, but what does every role entail? Okay, how do you get into that role? What are the skill sets that are necessary for a particular role, or if you want to get into a particular domain? Okay, let's start from the very start. Let's start scratching the surface and let's understand like what exactly is data science. Okay, if you are owning a phone right now, if you are using apps, if you are booking an Uber, okay, or if you're ordering a food, if you're watching something on the OTT, you are using data science. You are a consumer of data science, I would say. Okay, to start off with a very basic example, if I am watching something on Netflix understands what kind of content I'm watching. Netflix understands my taste, and with respect to that taste, it will recommend me something, right? It'll recommend me, like, for example, hey, seems like you're watching horror movies. Here are other 4 horror movies that you can watch. Yes. या फिर अगर मैं Spotify पे गाने सुन रहा हूँ, या Spotify पे समझ लो मैंने कुछ अच्छे पंजाबी गाने सुन रहा हूँ मैं, तो वो मुझे बता देगा कि यार यू नो व्हाट, देयर इज अ न्यू पंजाबी सिंगर ऑन द ब्लॉक, अब इसके गाने क्यों नहीं सुन रहे? यस. और लेट्स से आई एम गोइंग टू ऑर्डर समथिंग ऑन स्विगी, तो मैं स्विगी या फिर जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ, तो स्विगी मुझे बताएगा कि यार अगर आपको ठीक है, आपको फ्रैंकी खानी है ना, तो ठीक है, तो ये 5 बढ़िया जगह हैं जहाँ से आप फ्रैंकी ऑर्डर कर सकते हो. दिस इज अ चीज फ्रैंकी, दिस इज लाइक पनीर फ्रैंकी, मेयो फ्रैंकी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपकी प्राइस रेंज क्या है? ये प्राइस रेंज है, बढ़िया. ये कस्टमर व्यूज है, ये कस्टमर रिव्यूज. सो व्हाट आर वी सराउंडेड विथ? We are surrounded with intelligent recommendations. Okay, in a nutshell, we are surrounded with intelligent recommendations and intelligent choice making. Okay, और in a nutshell यही होता है data science, यही होता है machine learning. Okay, our body itself is a great example of machine learning. हम खुद को एक चीज पे ट्रेन करते हैं, our body gets trained to do something. Similarly, a machine gets trained, or an algorithm gets trained in a similar sense. Okay, so if you look into the slide, it says data science is like being a detective for numbers and information. Okay, and which is so true, क्योंकि data science में बहुत data science at the core क्या है? Data science at the core है pattern recognition और numbers. Okay, और data scientists जो है वो है ये detectives, जो ये सारे missing pieces और missing चीजों को एक साथ लेके आते हैं, मिसिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उससे पजल का आंसर लेके आते हैं, उसे सारे क्वेश्चंस सॉर्ट करते हैं. ओके, और वो क्वेश्चंस सॉर्ट करने के लिए यू नीड दोस डेटा साइंस स्किल्स. ओके, यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम्स. बट वो कैसे सीखना है, क्या सीखना है, हाउ इज इट? ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग. ओके, स्लोली एंड स्टडीली. ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस तो सब लोग नहीं सुना होगा यार, कि डेटा एनालिसिस करने के लिए आजकल टैबलू है, पावर बीआई है, एक्सेल है, देयर आर मल्टीपल टूल्स. यस, सो देयर इज लॉट ऑफ हाइप which is going on around data science, data engineering, data analytics, machine learning, which is absolutely very true. Yeah, and data science क्या करता है? data science के 2 काम है. एक होता है प्रेडिक्शन करना, दूसरा होता है क्लासिफाई करना. ठीक है, इन द वेरी नटशेल डेटा साइंस के 2 काम होते हैं. एक
होता है प्रेडिक्ट या फिर प्रेडिक्ट करना, जिसको रिग्रेशन भी बोलते हैं डेटा साइंस लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल सब लोग ने स्टॉक मार्केट के चार्ट्स कभी ना कभी लाइफ में देखे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक खोल के बैठा एंड आई एम सीइंग द ट्रेंड, समझ लो वो स्टॉक बढ़ ही रहा है पिछले 6 महीने से। तो वो जो एक ट्रेंड है और मेरे पास समझ लो 6 महीने का डेटा है और मुझे प्रेडिक्ट करना है कि अगले 3 महीने में ये स्टॉक की मूवमेंट कैसे होने वाली है, उसे कहते हैं प्रेडिक्शंस। वहां पे यूज किया जाएगा डेटा साइंस। सो अगेन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज जहाँ पे डेटा साइंस यूज किया जाता है। सेकेंडली इज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मेरे इनबॉक्स में कुछ ईमेल्स आ रहे हैं, माई एल्गोरिदम शुड अंडरस्टैंड कि कौन से ईमेल्स स्पैम है जो स्पैम फोल्डर में जाएंगे और कौन से ईमेल्स लेजिट है। ओके, कौन से ईमेल्स लेजिट है जो मेरे इनबॉक्स में आएंगे। यस, इन अ नटशेल आई एम गिविंग यू व्हाट इज डेटा साइंस। यस, तो सप्लाई और डिमांड का खेल है पूरा। ठीक है, करंटली देयर इज लॉट ऑफ currently there is lot of supply of data science, currently there is lot of demand of data science, but the supply of good data scientist, good data analyst is very less. Okay, क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस क्वालिटी का एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं, that is not really good. Okay, अच्छा क्वालिटी डेटा साइंस एजुकेशन is a big loophole in the industry right now. Okay, so obviously there is a high demand for data scientists or data analysts, but equally what is expected are good quality data scientists or good quality data analysts, so on and so forth. Okay, high demand because the thing is it is not इंडस्ट्री स्पेसिफिक। डेटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि यार आईटी इंडस्ट्री में ही चाहिए। डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, जो भी कोई लो यार, उसे फार्मा में चाहिए, हेल्थ केयर में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, बैंकिंग में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए, केमिकल में चाहिए, एडवर्टाइजिंग में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए। यू टेल मी द इंडस्ट्री, होटलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में चाहिए। यू टेल मी द इंडस्ट्री, मीडिया एंटरटेनमेंट, हर जगह पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस पर से। ओके, और यही बोलता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फील्ड्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फील्ड्स दैट इज आउट देयर। क्योंकि आपके पास जब आप डेटा साइंस सीखते हो, जब आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हो, आपके पास एक स्किल सेट आ जाता है और वो स्किल सेट आपको when you go out to hunt a job you don't struggle as much. Why? Because the skill sets that you're gaining, okay, over a period of time when you're in the course, they are so high quality, they are so much in demand that obviously companies will go out and get you or rather employ you because you have those kind of skills, and company do need good quality people who can use those skills in their company, okay, and give them the desired results. Yes, the field being extremely versatile, यहाँ पे जो skill sets यूज किए जाते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, बट नेचुरल यहाँ पे सैलरीज भी बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं। ओके, what do I mean by competitive salaries? They are one of the most high paying jobs, one of the most highly respected jobs. uh, the salaries that you get here as a fresher or as a fresher data analyst, as a fresher data scientist, as a fresher data engineer are way higher than any other fresher roles across different industries. Okay, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूअस लर्निंग दो ऐसी चीजें जहां पे यू हैव दैट इज योर लाइफ। कंटिन्यूअस लर्निंग, एक डेटा साइंस या फिर एक डेटा साइंटिस्ट को या फिर एक डेटा एनालिस्ट को, ही और शी हैज टू बी अ कंटिन्यूअस लर्नर। ओके, एवरी नाउ एंड देन यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ ऑन एन नंबर ऑफ स्किल्स। आज ये सीख रहे हैं, कल वो सीख रहे हैं, परसों आपको जाके कुछ और सीखना पड़ेगा, परसों परसों पता चल गया कि यार वो जो टूल हम लोगों ने 2 महीने पहले सीखा था दैट्स नाउ ऑब्सोलीट, वो नहीं यूज करना है, अभी कोई और टूल यूज करना है। But that's the part and parcel. Okay, it's a very demanding field. Okay, it's one of the most demanding fields that is there in the industry right now, but that is the whole game. Because it is most demanding, it is paying you well. See, if the field is not demanding, if the field is not high on skill sets, it will never pay you well. जो भी रोल्स इंडस्ट्री में अच्छे पे करते हैं, बहुत अच्छे सैलरीज देते हैं, बट नेचुरली द स्किल सेट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी. Yes, that goes hand in hand. I don't have to focus on it. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन डेटा साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेरे पास एक प्रॉब्लम आया है, मेरे पास एक डेटा है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी को जानना है कि शुड वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट. ये मेरे पास एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ कंपनी मेरे पास ये एक प्रॉब्लम आया है. आई डोंट नो हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू गिव इट टू माय डेटा साइंस टीम, आई एम गोइंग टू गिव इट टू माय एनालिटिक्स टीम, और दे आर गोइंग टू बिल्ड सम सॉल्यूशन, राइट?
एंड ऑब्वियसली when you build that kind of solution, जब आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने बिल्ड किया है, you can see that working in the real world. So the impact is very high. It's one of the most impactful jobs that is out there. It is one of the most impactful jobs because whatever you're doing, आपको सामने उसका impact दिख रहा है. It's like making a movie. Yes. For example, if you are any piece of a movie, for example, if you're a musician, you can see that यार ये तो गाने मैंने compose किए थे and now I'm seeing them on a big screen. If I'm the director, I'm seeing that movie on the big screen. It's your baby. You have created that algorithm and now just imagine, for example, जिन्होंने आज Spotify बनाया, जिन्होंने आज book my show बनाया, Zerodha बनाया, the kind of algorithmic prowess these services or products have, just imagine how satisfying those teams might be feeling. Yes, because जो आपने बनाया है आपके रूम में बैठ के आपके टीम के साथ 10 लोगों के साथ 10-15 लोगों के साथ, आज maybe millions of people are using that. Yes, so it's a very impactful job that is out there. Yes, why is, और इसका सबसे बड़ा आज के मार्केट में सबसे बड़ा प्लस बोलूंगा वो है जॉब सिक्योरिटी. ओके, यहाँ पे अंधाधुंध ले ऑफ्स नहीं होते. ओके, by unfortunately even if you get laid off you have other job waiting for you because obviously again same ratio or same thing, supply demand, because you guys are in demand. और अभी तो आपके पास वो एक्सपीरियंस भी है तो ऑब्वियसली बट एक्चुअली आपका डिमांड बढ़ गया, आपके स्किल सेट्स बढ़ गया, आपके सैलरी भी बढ़ गया. यस. So if you look at the salary graph in the markets, it's amazing. Okay, as I said, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप बाकी के इंडस्ट्रीज में बाकी के फ्रेशर्स जॉब्स उठा के देखोगे और डेटा साइंस फ्रेशर्स या फिर डेटा एनालिटिक्स फ्रेशर्स के जॉब उठा के देखोगे तो आपको एक सैलरी के अंदर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज पेइंग फॉर अ फ्रेशर रोल, इफ समवन इज पेइंग 4-5, यहाँ पे आपको दिया जाएगा 8-9-10 so on and so forth. It's way higher. Okay, it's way higher. Okay, क्यों? Because यहाँ पे skill sets भी वैसे ही included. Yes, the skill set is much more. Okay, there's a bigger bouquet of skills that are involved here, but that's the entire game. Okay. Now let us look at some of the roles in data science and analytics. Okay, क्योंकि ये काफी फैला हुआ है यहाँ पे जो roles हैं, responsibilities है, काफी फैले हुए हैं. So let's understand them in detail. Okay. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल, और ये जो दोनों रोल है 99% ओवरलैप होता है इन दोनों रोल्स में. ये दोनों रोल्स में जो आपका deliverables होता है, जो आपका roles and responsibilities होता है, they're absolutely the same. That is, one is the data analyst and the other is a business analyst. Okay, यहाँ पे आपका core job is to do data analysis. Okay, जैसे मेरे पास एक कुछ डेटा आया, मुझे उसका चीर फाड़ करना है और मुझे उसका एनालाइज करना है. ठीक है, मुझे उसको प्रेडिक्ट करना है कि यार कैसे होगा, क्या होगा. ओके, इसके लिए मुझे टूल्स लगेंगे पाइथन, मुझे लगेगा एक्सेल, आई विल बी नीडिंग एसक्यूएल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ओके टू हैव. मुझे लगेगा टैबलो या फिर पावर बीआई जैसा कोई रिपोर्टिंग टूल. यस, I'll be needing communication skills. Yes, because सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होने से नहीं होता इस पर्टिकुलर फील्ड में. इस फील्ड में आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए. अगर नहीं है तो स्लोली एंड स्टडीली इट ग्रोज विद द जॉब. इट्स फाइन. ओके, तो फॉर एग्जांपल इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द डेटा, क्लीनिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, इनसाइट्स, ट्रेंड्स. इट्स अ लॉट ऑफ डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा जॉब है. अगर आपको ऐसा जॉब चाहिए जहां पे आपका 50 to 60% टेक्निकल रोल होगा और द रेस्ट 40% कंसल्टिंग रोल होगा अपने क्लाइंट के साथ, तो ये रोल आपके लिए है. ओके, सबसे पहले आपको ये भी जानना है कि यार मेरे लिए कौन सा रोल है. मेरे लिए डेटा साइंस रोल मेरे लिए है, या फिर मेरे लिए डेटा एनालिस्ट का रोल है, मेरे लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल है, मेरे लिए डेटा इंजीनियर का रोल है, और शुड आई गेट इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड what you are cut out for. ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे ना 100% इंजीनियरिंग रोल नहीं चाहिए, मेरे को ना दिन भर बैठे कोड नहीं लिखना है, मैं 50 to 60 टेक्निकल काम कर लूंगा. 50-60% जहां पे भी मेरा छोटा छोटा पाइथन क्वेरीज लिखना है, एसक्यूएल क्वेरीज लिखना है, चार्ट्स बनाने हैं, बेसिक एनालिसिस करना है, डैशबोर्ड्स बनाना है, वो 50-60% मैं कर लूंगा. 50-60% मुझे कंसल्टिंग भी करना है, क्लाइंट से भी बात करनी है, क्लाइंट फेसिंग रोल चाहिए मुझे, क्लाइंट के पास जाना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आई हैव टू बिल्ड सॉल्यूशंस अलोंग विद माय टीम. ओके, ये अगर ऐसे रोल आपको चाहिए तो डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट का रोल इज फॉर यू. ओके, just explaining this to you in a nutshell. Okay, then you have the role of that of a data scientist or a machine learning engineer. Okay,
जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रोल आर यू कट आउट फॉर. ओके, इफ यू आर कट आउट फॉर अ 100% इंजीनियरिंग रोल, और इफ यू आर कट आउट फॉर अ हाइब्रिड ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरियल रोल. वैसे ही डेटा साइंटिस्ट जो है वो एक 100% इंजीनियरिंग रोल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रोग्रामिंग में मजा आता है, अगर आपको कोड लिखना बहुत पसंद है, एल्गोरिदम्स डेवलप करना पसंद है, स्टैटिस्टिक्स पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, ओके, आप चाहते हो कि आप अपने खुद के मॉडल्स बनाओ. ओके, मॉडल्स एज एन प्रेडिक्टिव मॉडल्स, प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स, जिसे आप प्रेडिक्ट कर पाओ, फोरकास्ट कर पाओ, क्लासिफाई कर पाओ, ओके, क्लस्टर सेगमेंट कर पाओ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, देन डेटा साइंटिस्ट इज द जॉब फॉर यू. डेटा साइंटिस्ट मतलब दे आर लाइक स्कल्प्टर्स, वो ग्राउंड अप चीजें बिल्ड करते हैं. डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट, they don't build as such. Okay, they build, obviously they build dashboards, they come up with analysis, क्योंकि डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस ये बहुत ही इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और लॉजिकल थिंकिंग का काम है. ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट भी लॉजिकल थिंकिंग का काम है, बट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एस्पेक्ट. यहाँ पे आपको ग्राउंड अप आपको सॉल्यूशंस बिल्ड करने होते हैं, कोड लिखना होता है, एल्गोरिथम्स डेवलप करने होते हैं. यस, सिमिलरली इज अ जॉब ऑफ दैट ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर. जब मैं एक एमएल इंजीनियर होता हूँ यार, मैं ना कि सिर्फ एल्गोरिथम्स वगैरह. सो अ मशीन लर्निंग इंजीनियर वर्क्स एक्सट्रीमली क्लोजली विद अ डेटा साइंटिस्ट. आई हैव वर्कड एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर इन वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. हमारा काम होता है कि यार डेटा साइंटिस्ट ने एक बार बना दिया, एल्गोरिथम्स वगैरह बना दिया, उसके बाद एक बार मैंने एल्गोरिथम्स का हैंड ओवर ले लिया, तो उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करने से लेके उसका मेंटेनेंस से लेके मेकिंग श्योर ऑल द एल्गोरिथम्स आर वर्किंग वेल, कहीं कुछ फटे ना, दैट इज वेयर मशीन लर्निंग इंजीनियर कम्स इनटू picture. Okay, so data scientists and machine learning engineer work hand in hand. डेटा इंजीनियर्स को ऐसा बोला जाता है कि दे एक्चुअली रन द शो. दे आर, बोलते हैं ना बिहाइंड द कैमरा, बोलते हैं ना, जो बिहाइंड द कैमरा का जॉब होता है ना, वो होता है डेटा इंजीनियर का. डेटा इंजीनियर ज्यादा ग्लैमर या फिर लाइमलाइट में नहीं होते हैं. ओके, दे आर द वन हु मेक श्योर एवरीथिंग इज रनिंग वेल. अगर आपने कभी ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, तो ऑर्केस्ट्रा का एक कंडक्टर होता है जो हु कंडक्ट्स द ऑर्केस्ट्रा. That is what a data engineer is. Data engineer has to make sure everything is running in tandem. All the databases are working well, databases are managed well, they are, उनका सिक्योरिटी ठीक से हो रहा है, उनका ETL प्रोसेसिंग जो है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, वो ठीक से हो रहा है, कहीं कुछ डेटाबेस फट नहीं रहा, लीक नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल ऑल द डेटा दैट इज गेटिंग पुल्ड आउट. फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप बैंक हो और आपके पास, समझ लो भारत भर में आपके पास 300 एटीएम है, तो 300 एटीएम से आपका डेटा जनरेट हो रहा है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार मेरा जो एवरी सिंगल डे मेरा जो डेटा जनरेट हो रहा है वो ठीक से डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं, ठीक से स्टोर हो रहा है कि नहीं, कहीं कुछ फट नहीं रहा है ना, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो यू आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. और आप जान सकते हो कि अभी स्लोली एंड स्टडीली डेटा इंफ्रा इज बिकमिंग अ वेरी बिग थिंग. ओके, इसलिए अभी एज ऑफ नाउ डेटा इंजीनियर्स इज अ वेरी लुक्रेटिव रोल इन द मार्केट. आई वुड से अभी डेटा साइंटिस्ट से भी ज्यादा डेटा इंजीनियर लोग का डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट्स का अभी फ्लड आ गया है. ओके, और डेटा इंजीनियर्स ऐसी फील्ड है जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार थोड़ा कम ग्लैमरस है, बट दैट इज नॉट द रीजन. ओके, एंड डेटा इंजीनियर एक ऐसी जगह है जहाँ पे द काइंड ऑफ, जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कंपेरेटिवली कम है. ओके, सो दिस इज अगेन वेर यू कैन थिंक. डेटा आर्किटेक्ट is a role which is a bit senior to that of a data engineer. अब आप थोड़े साल आप डेटा इंजीनियर का काम करके, डेटा इंजीनियरिंग का जॉब करके, यू कैन बिकम अ डेटा आर्किटेक्ट. ओके, डेटा आर्किटेक्ट इज मोस्टली, मेरे पास अगर डेटा बेसिस है तो उनको मैं स्केल कैसे करूँ, उनका सिक्योरिटी कैसे करूँ. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे जो डेटा बेसिस हैं, मेरे जो डेटा सेंटर्स हैं, वो कैसे एफिशिएंटली काम करेंगे, सब ठीक से होगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. दैट इज व्हाट अ डेटा आर्किटेक्ट इज ऑल अबाउट. These days a new role is booming up in the market, and that is of a quant or a quantitative analyst. Okay, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट काम करता है ट्रेडिंग एनवायरनमेंट्स में. ओके, इफ यू नो व्हाट अ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इज, इट्स बेसिकली स्टॉक मार्केट. ओके, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता है, ओके, एचएफटी जिसको बोला जाता है, वहां पे देयर इज अ नीड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिस्ट्स और क्वांट्स. ओके, तो यार ये क्वांट्स जो होते हैं ना, दे यूज ऑल मैथमेटिकल टेक्निक्स, एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ,
to come up with solutions. Okay. और यहाँ पे क्वांट के लिए भी यू नीड सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स. एक क्वांट के लिए पाइथन और एसक्यूएल बहुत अच्छा आना चाहिए. ओके, because that is the expectation from that of a quant. So if you are really good with Python and SQL, but you are like, hey, you know what, मुझे data scientist भी नहीं बनना है, but you want to be at a cusp, or rather at not a cusp, at an intersection of data science or data analytics and finance, क्योंकि quantitative analytics पूरा finance का खेल है. ओके, अगर आपको ऐसे रोल चाहिए जो है डेटा एनालिटिक्स प्लस फाइनेंस या फिर डेटा साइंस प्लस फाइनेंस, तो क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स इज द फील्ड फॉर यू. ओके, ऑपरेशंस एनालिस्ट जो होता है, ऑपरेशन एनालिस्ट मतलब होता है सप्लाई चेन में. ओके, इफ यू नो टुडे एवरी सिंगल ब्रांड, अगर आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लो तो फॉर श्योर उसकी उसका सप्लाई चेन डिपार्टमेंट तो होता ही है, ऑपरेशंस तो उसके होते ही हैं. ओके, तो ऑपरेशंस को एनालाइज करना, okay, to build models for the operations team, okay, to make sure everything is working well, so on and so forth. On the operations end, that is where operations analytics come into picture. Marketing analyst, मार्केटिंग एनालिस्ट और फिर दूसरा हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, दिस गोज हैंड इन हैंड. एक मार्केटिंग एनालिस्ट कौन होता है? जो मार्केटिंग में काम करता है, जो हु वर्क्स फॉर अ मार्केटिंग कंपनी. और हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट इज द वन हु वर्क्स फॉर अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सिर्फ it's just that if you're working for a finance company or a fintech data analyst, okay, सिर्फ नाम अलग होते हैं, but the skill set remains the same. Okay, अगर आप एक मार्केटिंग एनालिस्ट हो, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एड्स रन किए, ओके, तो वो अगर आपने कभी अगर एड्स रन किए, तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है वो समझना, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कैंपेन इफेक्टिवनेस कितना होता है. अगर हम नेक्स्ट टाइम ये एड रन करेंगे, तो अगर हमको और कन्वर्जन चाहिए कस्टमर्स का, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, कैसे कर सकते हैं हम, कस्टमर कैसे कर सकते, सॉरी सेगमेंट कैसे कर सकते हैं, टारगेट कैसे कर सकते हैं कस्टमर्स. दैट इज all a job of a marketing analyst. Healthcare data analyst is someone who works in the healthcare industry, someone who understands healthcare or pharma. Okay, for example, मैंने अगर एक टैबलेट निकाला है, okay, और for example मेरे पास कॉम्पिटिटर के पास कुछ एक टैबलेट है, okay, and then let's say similarly if I want to also come up with a similar kind of competitive tablet in the market, I have to understand or study the market and come up with it. So वो जो पूरा analysis करना होता है for the healthcare market, that is being done by the healthcare data analyst. Sports analyst is something that is, हम जब IPL देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, टुडे वी हम जब भी मैच देखते हैं, राइट, तो यार हम हमको स्क्रीन पे दिखता है कि वो कितना डेटा पॉइंट्स लेके हमको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कमेंटेटर्स. या फॉर एग्जांपल कौन से बॉलर का पिचिंग कैसे था, ओके, आज का पूरा मैच का डायनामिक्स कैसे था. इट्स पहले पहले फॉर एग्जांपल लेट्स गो 10 years बैक और 12 years बैक, 15 years बैक, सिर्फ एवरेज रन रेट, मैक्सिमम विकेट, मैक्सिमम रन्स, इसी पे पूरी चर्चा होती थी. बट एज ऑफ नाउ द थिंग इज द परफॉर्म, it's more about a player's performance rather than the team's performance. Yes, so it will tell you everything. वो पूरा आपको, they give you in detail all understanding, all dynamics of that particular game. That is what a sports analyst is all about. Geospatial analyst is something to do with it's actually not for, it's not that big a role. Okay, geospatial analyst is a very narrow and specialized kind of role, which works with satellite data, so on and so forth. That was all about it, guys. If you have any questions, please feel free to ask, guys. Any questions you want me to take, please tell me. If you have any questions, please feel free to ask. Guys, any questions? Any questions, guys? Please feel free to ask. आप chat में पूछ सकते हो. Yes. Guys, any questions? बिंदास पूछो. Yes, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए वाइडली यूज करी जाने वाली लैंग्वेज पाइथन है. There is always a debate between Python and R. Okay, many a times people are confused कि यार Python के साथ जाएं या फिर R के साथ जाएं. But the thing is, both the languages are equally. I would say Python is much more powerful as compared to R. But R is also widely used, especially in statistical data analysis. Especially banks में आज भी R use होता है. But Python is a much better language to have or learn as compared to R, is what I think. क्योंकि
पाइथन के साथ काम करना बहुत ईजी हो जाता है एट अ गिवन आफ्टर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और आर के साथ इवेंचुअली टफ होते जाता है, सो आई वुड गो फॉर पाइथन. Network marketing analyst. I don't know about what is network marketing analyst. I know what is a marketing analyst, so I don't know, to be frank on this part. Yeah. Any more questions, guys? Any more questions? What are the key steps in a data science workflow? Okay. So let's say if you are building a data science project, okay. So what is the key workflow here? For example, सबसे पहले I will do something called as data ingestion. Okay, what is data ingestion? Data ingestion मतलब मेरे पास डेटा आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है डेटा का, यार उस डेटा की गंगोत्री क्या है. ओके, सो कहाँ से आ रहा है, डेटा बेसिस में से आ रहा है, सेंसर्स में से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है डेटा. ओके, कुछ सर्वे फॉर्म से आ रहा है. सबसे पहले डेटा इंजेक्शन होता है, उसके बाद वो डेटा देखा जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट डेटा इज एब्सोल्युटली अनटाइडी. ओके, अनक्लीन डेटा होता है, उसको डेटा क्लीनिंग करना होता है. ओके, सर सबसे पहले हो गया डेटा कलेक्शन, तो फिर हो गया डेटा इंजेक्शन, फिर हो गया डेटा क्लीनिंग. ओके, डेटा क्लीनिंग साफ सुथरा चकाचक करने के बाद उस पर किया जाता है प्रिलिमिनरी एनालिसिस, जो डेटा एनालिस्ट्स वगैरह करते हैं. यस, प्रिलिमिनरी एनालिसिस करने के बाद यू अंडरस्टैंड ओके 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 दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. उसके बाद किया जाता है डेटा मैनिपुलेशन. Data manipulation, which is again a part of exploratory data analysis. Okay, exploratory data analysis, the name itself suggests that you're going to explore the data to its depth. Okay, तो आप हर एक वेरिएबल को, एट्रीब्यूट को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हो. ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेक आउट ऑफ दैट डेटा. ओके, एंड देन वंस द डेटा इज बीइंग रेडी टू सो डेटा को रेडी करना पड़ता है, और वो जब डेटा रेडी होता है तब जाके उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है. ओके, तो वो एक बार डेटा मेरा रेडी हो गया, जिसको इट हैज टू गो थ्रू मल्टीपल थिंग्स. ओके, इट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड, स्केल्ड, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इट हैज टू बी क्लीन. देन उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. एक बार मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जहां पे हम डेटा को स्प्लिट करते हैं. एक बनता है ट्रेनिंग डेटा, दूसरा बनता है टेस्टिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा पे हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, मतलब वो जो ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, फॉर समझ लो एक डेटा सेट होगा 100 रोज का, 100 में से 80 में दूंगा ट्रेनिंग डेटा में, 20 रखूंगा ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा पे. ट्रेनिंग डेटा पे मैं अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करूंगा, एंड जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे द सेम आई अप्लाई ऑन टेस्टिंग डेटा. आई सी इफ my algorithm is working equally well on testing data or not. And then there are different metrics on which I try to understand if the algorithm is performing well or not. बहुत सारे आइटरेशंस करना होता है, तब जाके हमें कुछ ठीक ठाक एल्गोरिदम और ठीक ठाक प्रेडिक्शंस या फिर क्लासिफिकेशन मिलते हैं. वंस दैट इज डन, द एल्गोरिदम इज बीइंग डिप्लॉयड ऑन क्लाउड, AWS ले लो, GCP ले लो, Azure ले लो, जो भी है. और उसके बाद जो पूरा खेल आता है वो होता है डेटा इंजीनियर्स का, टू मेक श्योर एवरीथिंग इज रनिंग वेल. दैट्स अ डेटा साइंस वर्कफ्लो. Any more questions? In order to become okay, so in order to get into or become a data scientist, what are important skills? Okay, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं पाइथन, SQL, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डॉकर, लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग. Then I would also suggest some big data technologies. Okay, ये एक बेसिक सा स्टैक डेटा साइंटिस्ट के लिए ठीक ठाक है. फॉर डेटा एनालिस्ट, ही और शी शुड बी कंफर्टेबल विद पाइथन अप टू एटलीस्ट पाइथन में EDA तक उनको आना चाहिए. EDA मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. पाइथन में EDA तक आना चाहिए. SQL बहुत अच्छे से आना चाहिए. वेदर यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डजंट मैटर, SQL आपको हमेशा अच्छा आना ही चाहिए. विदाउट SQL you cannot survive in the data field. Okay, एनालिटिक्स, साइंस या इंजीनियरिंग में आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे. SQL आना है आपको, पाइथन आना है EDA तक. Excel is something that you should know. You should know either one reporting tool, either Power BI या फिर Tableau. एक भी पता होगा तो you can be easily trained on the other. So having an understanding either of Python, Tableau or Power BI is good enough. Okay, and yeah, and even if you have tool of any one more, for example Linux, अगर आपको आ रहा है shell scripting हो ना, it's cherry on the cake. So I think that is good enough to have a skill.
what is the best dashboard representation? It depends. It's not like कि power भी आ रहा है तो या फिर tap. It's not like that. You can be, you can have knowledge or certification, or you can have hands-on experience on anything. Power BI, Tableau, doesn't matter. Power BI is compared to be a slightly more powerful as compared to Tableau, because Power BI mean Power Query, easy integration with SQL, easily deployable on cloud. Okay, for in my understanding, Power BI is a comparatively better data reporting tool, but that is in my understanding. Okay, but that is in my understanding. Cool, not in but obviously and पावर बीआई के लिए रोल्स भी ज्यादा हैं, सो आई वुड गो फॉर पावर बीआई. Yeah. Any more questions, guys? Please feel free to ask. There's any more questions? Any more questions? Please feel free to ask. The biggest skill set of the biggest skill set of a data scientist or a data analyst is how well can they communicate टेक्निकल डेटा टू नॉन टेक्निकल पीपल. क्योंकि मेनी अ टाइम्स टेक्निकल स्टफ हम लोग एल्गोरिथम्स बनाते हैं, हम लोग अलग अलग कोड लिखते हैं, we do a lot of stuff and the end. So the people that you are presenting it to, वो लोग यूजुअली होते हैं फाइनेंस वाले, एडमिन वाले, मार्केटिंग वाले, एचआर वाले. तो उनको कोई लेना देना नहीं है यार कि आपने कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया है, आपने क्या किया, आपने स्केलिंग किया है, मिन मैक्स स्केलर, कौन सा कोड यूज किया, कौन सी लैंग्वेज यूज किया. They don't give a heck about anything. They just want to know what is the end result. और यार ये जो तूने ये जो किया है ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है. That is all what they need to understand. So how will you communicate that technical data to the non-technical people? That is all what matters. Okay. So मेरे पास अगर कुछ technical data है, समझ लो मैंने कुछ लीनियर रिग्रेशन लगा के कुछ एक स्टॉक प्रिडिक्शन किया है. ओके, सो यार मैं वो जो है मैंने जो प्रिडिक्शन किया है वो जो टेक्निकल डेटा है, तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, समझ लो फाइनेंस वाले, उनको मैं कितने आसान तरीके से समझा सकता हूँ ताकि मैं अपना सोल्यूशन उनको प्रपोज कर पाऊँ. ओके, उनको एक हिसाब से आई कैन इन्फ्लुएंस देम. दैट इज द कोर, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स टू हैव एज अ डेटा साइंटिस्ट और अ डेटा एनालिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैब्लो? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों डेटा रिपोर्टिंग टूल्स हैं, दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं. देयर इज नो बिग डिफरेंस. ओके, इट्स जस्ट दैट वन इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, द अदर इज ओन्ड बाय सेल्सफोर्स, और कुछ नहीं. स्केलेबिलिटी इसके आई थिंक थोड़ा, आई थिंक पावर बीआई इज मच मोर पावरफुल एज कंपेयर टू टैब्लो, but again there are companies that use Tableau as well. But if your company is using Azure, for example, Azure के साथ easy integration होता है Power BI का, because both are Microsoft products. So that's the only difference, और कुछ नहीं. Any more questions, guys? How to learn natural language processing for data science? NLP is one of those areas in data science, wherein it's one of the core areas. Okay, जो एक specialization के तौर पे माना जाता है. ठीक है, तो NLP सीखने के लिए you can take up any course. Okay, firstly I would suggest start off with the most basics. Okay, you have multiple courses, but I think NLP भी सीखने से पहले data science ठीक से सीख लो, supervised unsupervised वो सब सीख लो पहले, then you get into natural language processing. Okay, there is no one way to learn NLP. इट्स जस्ट दैट कि अगर आप एक बार आपका मशीन लर्निंग के बेसिक्स अच्छे हो गए,
तो आप natural language प्रोजेक्ट जैसे you can just start learning it. It's fine. Is VBA Excel is important? आजकल VBA तो it's good to have knowledge of VBA. I won't say it's not, but it's not like the important quality to have for a data analyst to bag a job. Okay, I won't say that. Okay, um, it's good to have, but Excel में mostly important होता है. Try to learn Power Query. Okay, Power Query आना important है. Statistical analysis Excel पे करना वो आना important है. Excel पे dashboards कैसे build करते हैं वो आना important है. Index match के formulas, VLOOKUP के formulas, HLOOKUP, XLOOKUP, conditions, lambdas, arrays, ये सब सीख लो. Yeah, that is important. I think. Yeah, that is mostly important. Yeah. Any more questions, guys? Any more questions, guys? Please tell me. Yes, guys. Any question? Please feel free to ask it. If it's as dumb as possible, it's fine. We're all here to learn. You can ask all the questions or any questions that you want. Okay, it's totally fine. Okay, cool. Then thank you so much for joining in for today's webinar. I thank you all. My name is Chirantan. Okay. Thank you all. I hope it was meaningful to you guys. And I'm sure if you join DhiSter Education, it'll be a really impactful experience. Okay, I am one of the or other faculties of data science. I have taught at multiple places, including IIT IM. So, yeah, that is something that I can assure you. So, please feel free to join Digital Education. You will have, trust me, you will have really hands on and good quality data science education here. Yeah. Thank you so much for joining in. My name is Chirantan. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Bye. Take care.